Hi everyone, my name is Nikhil Rana and I am a senior data science consultant. I have been working with Croma campus from last 4 years, and if I talk about my total experience, it's around 12 years. So in these 12 years I have worked on AI, machine learning and data science in different formats. And this is a demonstration video of Power BI. So let us begin. I welcome you to the demonstration video of Power BI. I have been working with Croma campus from last 4 years. And if I talk about my total experience is of 12 years, and I have worked in the field of data science, data analysis, machine learning, AI, and web development. So let us begin. So we begin first of all with the understanding of what Power BI is, right? So we will study this and understand about the Power BI, what it is and where it is used for. And before that, let us understand what data analysis is. Data analysis is something, or it can be described as a process which helps you to get the benefits or get the insights out of the data so that you can use it for your own purpose. फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ. लेट अस से एनी कंपनी इज गोइंग टू लॉन्च अ प्रोडक्ट. एक कंपनी एक प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहती है एंड द कंपनी ऑफिशियल्स और द कंपनी मैनेजमेंट इज ट्राइंग टू गेट एन इनसाइट कि वो प्रोडक्ट लॉन्च करना हमें किस एरिया में सबसे ज़्यादा यूज़फुल होगा, किस एज ग्रुप को वो टारगेट करें तो उनका प्रोडक्ट इट कैन बी अ हिट एट वन गो, एंड what gender they should target first. लेट अस से कि वो प्रोडक्ट ऐसा है कि दोनों जेंडर्स यूज़ कर सकते हैं. सो किस जेंडर को वो पहले टारगेट करें ताकि उनका प्रोडक्ट जो है फर्स्ट टाइम हिट हो सके. फाइन. तो इस तरह का एनालिसिस, इस तरह के क्वेश्चंस का आंसर जो है यू कैन गिव विद द हेल्प ऑफ पावर बीआई. तो पावर बीआई की हेल्प से जो उस कंपनी में डेटा एनालिस्ट होगा, डेटा साइंटिस्ट होगा, he or she will be telling the top officials कि हम पिछले 5 साल का या पिछले 10 साल का डेटा को एनालिसिस करके फ्रॉम डिफरेंट कंपनीज एंड सिमिलर प्रोडक्ट्स जो पहले उस तरह के प्रोडक्ट्स लॉन्च हो चुके हैं, उन सिमिलर प्रोडक्ट्स को किसने किस जेंडर में पहले टारगेट किया, किस एरिया में पहले टारगेट हुआ, और उसके उस टारगेट से क्या वो प्रोडक्ट सक्सेस हुआ या फेलियर हुआ, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग वो जो डेटा एनालिस्ट है वो अपनी टॉप ऑफिशियल्स को बता सकता है कि सर और मैम दिस इज व्हाट वी हैव टू डू, दिस इज वेयर वी शुड टारगेट आवर मार्केटिंग टीम टू मार्केट द प्रोडक्ट. तो दिस इज वेयर पावर बीआई कम्स इन हैंडी, बिकॉज पावर बीआई एक ऐसा टूल है, इफ आई एक्सप्लेन यू, इट इज अ कलेक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर सर्विसेज, एप्स and connectors that work together to turn your unrelated sources of data into coherent, विजुअली इमर्सिव एंड इंटरेक्टिव इंसाइट्स. तो यही चीज मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो पावर बीआई है दैट हेल्प्स यू गेट द डेटा, जो कि आपको लगता था कि इसमें आपस में कोई कनेक्शन नहीं है. आप उसमें एरिया वाइज चेक कर सकते हो, सेल्स पिछले 5 साल में सिमिलर प्रोडक्ट्स की कितनी हुई है फॉर डिफरेंट कंपनीज. यू कैन चेक कि वेदर दैट प्रोडक्ट इज बीइंग यूज्ड बाय विच जेंडर द मोस्ट. ठीक है, पहले उसको मेल ज़्यादा पसंद करते हैं या फीमेल ज़्यादा पसंद करते हैं, राइट. तो इस तरह से आप अपनी कंपनी का हेल्प कर सकते हो कि सेल्स को इंक्रीज करने में, प्रॉफिट को इंक्रीज करने में, कस्टमर बेस एक रेडी करने में. ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं कंपनी ऑफिशियल्स जब पूछते हैं तो डेटा एनालिस्ट इज द ओनली पर्सन हु कम्स टू द रेस्क्यू, राइट. सो एंड पावर बीआई इज दैट टूल जो कि उस डेटा एनालिस्ट की हेल्प करता है सो दैट दे कैन ईजिली कनेक्ट टू द डेटा सोर्सेज, उनको विजुअलाइजेशन करके देख सके, उनको एनालिसिस करके देख सकें एंड डिस्कवर व्हाट इज इंपॉर्टेंट और उसको आगे शेयर कर सकें. सो एक टूल है जो कि हमें हेल्प करता है, राइट. लेट मी शो यू वन एग्जाम्पल कि पावर बीआई, आई एम जस्ट गोइंग टू गिव यू एन ओवरव्यू कि किस तरह के हम जो रिपोर्ट्स हैं वो पावर बीआई में रेडी कर सकते हैं, राइट. तो अभी मैं आपके साथ जो शेयर कर रहा हूँ दैट इज गोइंग टू बी अ रिपोर्ट, राइट, विच इज in which we are segregating the report according to the regions. For example, here you can see regions and age groups.
अगर हम इस रिपोर्ट का सिर्फ ओवरव्यू देखना चाहते हैं तो इस तरह से हम रिपोर्ट बना सकते हैं. फॉर एग्जांपल हियर यू कैन सी कि पॉपुलेशन एंड पॉपुलेशन परसेंटेज फीमेल इन टोटल बाय ईयर एंड रीजन नेम, right? So these are the regions like Africa is there, Asia, Europe, North America, South America and all. So with respect to all of this we can very precisely see, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि we are getting region name Africa, and population percentage in female in total 50.12, region name Asia and all, right? So इस particular point पे ये सभी का हमें show कर रहा है, right? This is like this. So and population, so these are different type of chart. This is line chart. If this you go for this is your column chart, and this is an overview which is being given. और अगर आप इस तरह से सेलेक्ट कर सकते हैं हम रिस्पेक्टिव ईयर कि इस एरिया में किस चीज़ के कॉरेस्पॉन्डिंग और with respect to region name, population of female and population total population by region name, how we can see, right? So this is how we can visualize the things. Then if we talk of regions and age groups, ये देखो यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की टोटल पॉपुलेशन शो हो रही है, कनाडा की टोटल पॉपुलेशन शो हो रही है, ग्वाटेमाला की पॉपुलेशन, क्यूबा की, डोमिनिकन रिपब्लिक, हैती, then Honduras and different El Salvador, Mexico, different regions are being shown here. तो यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका. if we just check for babies, right, baby population, child population, senior population and so on, we will get the results. So here we are just checking select all. If we select all, then we will get the report here that in for example Bahamas senior population is this much, right? Then if we check for same thing in Bahamas child population is this much. For Asia, if we just change the region, so you can see Pakistan child population in this one for different years, right? So these are the kinds of reports, such an interactive report. आपको सब कुछ अपने डैशबोर्ड पे दिख रहा है. This is what you can generate using पावर बी आई. तो पावर बी आई एक बहुत पावरफुल टूल है जिसके थ्रू आप विजुअलाइजेशंस क्रिएट कर सकते हैं. दीज विजुअलाइजेशंस आर ओनली गोइंग टू हेल्प दी टॉप मैनेजमेंट ताकि वो कोई डिसीजन ले सके, राइट? बिकॉज व्हेन वी आर वर्किंग इन रियल टाइम सिनेरियोज, जब हम जैसे फॉर एग्जांपल आई एम टेकिंग द एग्जांपल ऑफ लॉन्चिंग ए प्रोडक्ट. तो जब प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं तो देयर आर नंबर ऑफ थिंग्स विच आर एट स्टेक. ठीक है, सिर्फ पैसा मेहनत ही स्टेक पे नहीं होती है, जो कंपनी की रेपुटेशन है दैट इज एट स्टेक. कंपनी के टाइप्स उस एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को लेके व्हेन company launches a new product, number of tie-ups are there in the place, investors money is there in place, stakeholders are there, company की yes as I mentioned earlier reputation is also at stake. तो बहुत सारी चीज़ें स्टेक पे होती हैं और अगर वो प्रोडक्ट फेल होता है तो कंपनी पैसे के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें लूज कर सकती है, राइट? तो इस फ्यूचर जो टाइप्स होते हैं, फ्यूचर जो प्रोडक्ट्स होते हैं, फ्यूचर प्रोजेक्ट्स होते हैं, दैट कैन ऑल्सो बी एट स्टेक. हो सकता है कि अगर उसी प्रोडक्ट के फेलियर या सक्सेस पे नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है उसकी डील हुई हो कि येस इफ योर प्रोडक्ट गोज फाइन वी विल गिव यू दिस प्रोडक्ट ऑल्सो, वी विल गिव यू दिस प्रोजेक्ट ऑल्सो. तो इस तरह की चीज़ें जो है दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर टुडेज एमएनसीज एंड companies rely a lot on this. For example, you can see here we are getting the measures, right? If we want to see the relationships between the different populations, so here you can see we are getting this category as a child category. In 1980 this was the population, and if we see this is the child category. Again 2030 ये population हो सकती है. तो now we are going to predict also कि 2030 तक population कितनी हो सकती है, right? 2040 तक पॉपुलेशन कितनी हो सकती है, right? So this is not obviously not the accurate thing, but depending upon the past analysis, depending upon the past data, one can easily predict कि अच्छा अगर इस रेट पे जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज हो रही है तो आज से 5 साल बाद 10 साल बाद पॉपुलेशन कैसे हो सकती है. एंड दिस इज नॉट ओनली गोइंग टू हेल्प योर प्राइवेट कंपनीज, गवर्नमेंट बॉडीज also rely on this a lot. For example, अगर आप यहीं पे इसी एग्जाम्पल को कंसिडर करते हैं तो अगर 2030 में
हमारी चिल्ड्रन पॉपुलेशन इतनी इतनी होने वाली है, राइट? सो ऑब्वियसली जो गवर्नमेंट है, इट शुड बी रेडी फॉर दैट, ठीक है? कि जो भी अ, हमारे चिल्ड्रन हैं, उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं, स्कूल्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, एवरीथिंग, राइट, विच दे रिक्वायर, जो कि गवर्नमेंट का पार्ट है, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग दे कैन गेट रेडी, राइट? सिमिलरली, इफ वी थिंक ऑफ यंग एडल्ट, ये पॉपुलेशन है. इफ वी थिंक ऑफ this category which is adult, you can go with it. Here is senior. अब senior जो senior लोग हो जाते हैं, फॉर एग्जांपल लेट अस से मोर देन 60, राइट, जिनकी एज 60 से ऊपर, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो गवर्नमेंट है वो रेडी हो सकती है, राइट? सो दीज आर नंबर ऑफ द थिंग्स विच पावर बीआई कैन हेल्प अस टू प्रेडिक्ट, हेल्प अस टू वर्क ऑन, गेट द इनसाइट्स, so that we can get ready according to it, right? So this is what I wanted to tell you कि इस इतना powerful tool है Power BI, and we can work on it with a data, with a lot of data, and get the perfect insights for our requirements, right? So coming back to the PPT. So here you can see I was just telling, so this is all about Power BI, and next what are the various features of Power BI. अब हम features की बात करें कि Power BI में कौन से ऐसे features हैं जो कि Power BI को इतना popular बनाते हैं, इतना efficient बनाते हैं. Now data set filtration. जब भी हम रियल टाइम सिनेरियो की बात करते हैं, तो रियल टाइम सिनेरियो में यू कैन, आपको जो डेटा मिलता है वो डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से मिलता है, राइट? एंड डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज के ऑब्वियसली डेटा का फॉर्मेट, स्ट्रक्चर, शेप कभी भी सेम नहीं होता, राइट? सो यू हैव टू फिल्टर द डेटा अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम यू आर फेसिंग. तो आपको वो जो डेटा है उसको फिल्टर करना है, उसको क्लीन करना है, उसको जो भी आप उसमें आई मीन टू से, you can say the values which you don't need, उसको remove करना है. Number of things are there, right? वो आप सब बहुत easily just with some, you can say simple clicks you can do it. बहुत easy है. Then we do have numerous data visualizations, वो तो मैंने आपको show कर ही दिया कि there are number of visualizations of Power BI जो कि help करती है हमें, so that we can visualize and analyze the data in a proper manner. Then we have flexible tiles and navigation pane. What does this mean? This means कि जो Power BI है that is very user friendly. Here you can see user interface of Power BI is very friendly. आपने खुद ही देख लिया, अगर हम user interface देखते हैं Power BI का, तो here it is. For example, see, everything is there right in front of you. So this is actually Power BI desktop, and if I show you तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस है कि आप यहाँ से सिंपल डायरेक्ट गो टू द डेटा सोर्सेज, जो आप डेटा आपको चाहिए, राइट? यू कैन गो टू दी एक्सेल वर्कबुक, पावर बीआई डेटा सेट्स अगर आपके पास हैं उनको आप इंपोर्ट कर सकते हो, SQL सर्वर से इंपोर्ट कर सकते हो. एंड देयर आर मोर देन 90 डेटा सोर्सेज जो कि पावर बीआई हमें जहाँ से इंपोर्ट करने की privilege देता है, right? For example, if I click on more, you will see that there are lot of data sources with which we can get the data from. See, there are huge number: Power BI data sets, Power Data Flow, SharePoint, Dynamics, NAV, Azure DevOps, Salesforce Objects, Mixpanel, Marketo, right? Amazon Athena, ODBC, number of things are there. So आई डोंट थिंक कि कोई ऐसा डेटा सोर्स होगा जिससे पावर बीआई का कनेक्शन नहीं हो, राइट? सो यू कैन इजीली कनेक्ट पावर बीआई विद एनी डेटा सोर्स which is frequently used in the market. So that is what it helps us in as a user friendly way. Then customizable dashboards, you can easily customize dashboards. आपको मैंने अभी शो किया कि एक हमने डैशबोर्ड बनाया जो कि हम अपने यूजर्स को, मैनेजमेंट को शो कर सकते हैं जिनको भी रिक्वायरमेंट है, सो दैट दे कैन टेक डिसीजंस इजीली ऑन दैट. देन डैक्स डेटा एनालिसिस और डेटा एनालिसिस एक्सप्रेशंस, राइट? तो पावर बीआई में कुछ कुछ क्या बहुत सारे ऐसे इनबिल्ट फंक्शंस है जो कि हमें हेल्प करते हैं कि हम इजीली डेटा पे वर्क कर सके. दे आर इनबिल्ट फंक्शंस, right? Let me show you, and I'll just show you from internet that what are the various DAX functions. See, there are a number of DAX functions. If I show you here, see, DAX functions, if I
click on, you can see aggregation functions are there, date and time functions are there, filter functions are there, financial functions are there, information functions are there, logical functions are there, math, trigonometric functions, parent and child functions, relationship functions, stats key functions we have. Right, let us have a look at statistical functions. See how many number of functions are there. You can use exponential distribution, geometric mean of expression value each row. Here you can see geo mean x, that means along x-axis for each row you can calculate the geometric mean, median, normal distribution, you can say inverse of the normal cumulative distribution. Number of functions are there. So for every field we do have functions, right? For example, if I just the date and time function, so हमारे पास, if you want to get the date time in a particular format, you can get it from here. Date difference, it is going to give you the difference between two dates, that how many dates have passed, how many days have been passed. Then we do have R, if you want to get the hours, minutes, months. Now what is the time currently, what it is, it will get the time from your system, right? So these are number of functions in a date time category. So these are some of the features which make Power BI such a clean and important tool. Now, not only common man, but there are number of MNCs, big giants, which are using Power BI. Just Accenture is there, Deloitte is there, Capgemini is there, Dell is there. Then we do have Wipro. So these are the different companies which are working in different fields, right? So Power BI is not only related to one field, because analysis तो किसी भी field में हो सकता है, right? It can be in any field. It can be in the field of e-commerce, it can be in the field of medicines, it can be field in the field of defense, it can be in the field of healthcare sector, it can be in the field of education, anywhere, right? So analysis is one of the important concepts which is associated with every field. So if you want to analyze the data, if you want to get insights from the past data, you can use Power BI. Now, so this is all about Power BI ki kaun si companies, what are the features and what it is. So let us now see ki what you will be getting from the us from us when if you get enrolled in this course. So you will be given the assignments related to Power BI, in which you will be asked to work on. So here you can see we do have a number of assignments of Power BI, right? So which will be given to you, and you have to work on them. For example, I'm just going to open one of the assignments. Like this assignment is related to Power Query Editor, and in this you have to work on the data, you have to do the data cleaning process, data cleaning operations आपको करने हैं, so that आप अपने data को ready कर सको for analysis purpose. अब उसमें it can be inclusion of removal of errors, removal of null values, splitting and merging of the queries, number of things are there, right? So इस तरह से आप you will be given the data set, and it is not according to a particular data set only. Whatever the data set will be provided to you, you have to work accordingly. So every data set has different operations. हो सकता है जो data set आपको provide किया है उसमें कोई errors नहीं है, but it can also be possible the data set which you have been given, there are a lot of errors in it, there are a lot of null values in it. So you have to work accordingly by applying the operations, and first of all manually analysis of the data needs to be done. Then yes, pivoting and unpivoting concepts. So these are different concepts which you need to work on. Merging of the queries, in which joins are there, right? You have to create the file. So here you are being given the data, and you have to sort the data according to category ID and origin state, and that is where you can apply the concepts you will learn. Then next, if I show you about Power visualizations, Power BI visualizations. So this is what you have to work on. For example, let me show you what are the various visualizations present in the Power BI. Okay, so here you can see there are a number of visualizations, approximately 36 visualizations are right in front of you. There can be more if you want to import, right? So you can see we do have area chart, we do have stacked area chart, we do have line chart,
clustered bar chart, donut chart, pie chart, number of chart, map is there according if you want to get the data according to the regions and you want to show it in the form of a map. तो इस तरह से आप विजुअलाइजेशन अप्लाई कर सकते हैं एंड एवरी विजुअलाइजेशन इज हैविंग इट्स ओन प्रोज एंड कॉन्स राइट. तो किस डेटा को कौन सी विजुअलाइजेशन में आप बेटर प्रेजेंट कर सकते हो, दैट इज व्हाट यू विल बी practicing, right? Then we do have here is another website which is in which data is being given on online link from the where you can fetch the data and you have to do all these visualizations, right? So these are some of the assignments you will work on. And as I already told you कि जो Power BI है that is used for analysis purpose. On regular intervals you will be given the data and you have to work on it and analyze it and you have to provide the insights from the data, right? So this is what we expect from you after you learn Power BI, and this is what is required to from you. Now let us see that what is what the course content you are going to work on. In Power BI you will be working on, so we will be discussing here the course content. For example, this is the course content which you will be getting from us, and the introduction to the Power BI basics, that what you can create, what you can work on. Then what is Power BI desktop, we will see how we can do the data transformation using Power Query editor. Then modeling, what are the various models which we work on, and how we can create the relationships between different tables. Then what is DAX, as I already told you, these are the different type of functions which are present there in the Power BI. So इन functions को use करके हम कैसे अपना task easy कर सकते हैं. Then like already shared with you, date and time intelligence, logical, mathematical, all these functions are there which are going to help us in different ways. Then visualizations, ये तो हमने discuss कर ही लिया कि visualizations we will be seeing how we can create KPIs, cards, gauges. Then these are the different operations, drill down and drill up आप कैसे अप्लाई कर सकते हो, फिल्टर्स आप कैसे लगा सकते हो, स्लाइसर्स आप कैसे अप्लाई कर सकते हो. इट कैन बी वर्टिकल स्लाइसर्स, इट कैन बी हॉरिजॉन्टल स्लाइसर्स. इफ आई शो यू, these are the slicers here, these are the slicers. ये हॉरिजॉन्टल स्लाइसर है, ये वर्टिकल स्लाइसर है, राइट. सो इस तरह से हम कैसे इनको अप्लाई करेंगे. Then we do have with us how we can get the insights from the data, how we can create the dashboards and all, and obviously connectivity to different sources like Excel, CSV, ODBC or SQL. And yeah, so this is all about your Power Query course content, Power BI course content, sorry. And yeah, this is it. Thanks for joining.